So this is the development of the aortic arches. Okay, all of us know that there is ventral aorta, then there is this two, they unite posteriorly to form the dorsal aorta. Okay, and there are 6 arches on the right side, 6 arches on the left side. The first arch artery disappears, and this first arch artery remains, as part of it forms the maxillary artery. Second arch artery also disappears, part of it remains as stapedial artery, may contribute little bit to external carotid. Now coming to the third arch artery. The third arch artery forms common carotid, and it gives a bud external carotid, and beyond that bud it continues as internal carotid. Okay, so it may give a bud which forms external carotid, and beyond that bud internal carotid. A fourth arch artery contributes to the arch of aorta. Now if आर्च ऑफ एओर्टा, मैंने अभी पूछा इसको कि किससे डेवलप होता है, तो उसने मुझे क्या बोला, फोर्थ आर्च आर्टरी. आपने ही बोला ना सर? नहीं, देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स. सी, देयर इज ट्रंकस आर्टेरियोसस which gets divided into 2 parts. It forms pulmonary trunk and ascending aorta. ट्रंकस आर्टेरियोसस से 2 चीज फॉर्म होते हैं, उसके अंदर स्पाइरल सेप्टम आता है, बल्बार सेप्टम आता है. 2 चीज फॉर्म होते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस. सो व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ascending aorta? Truncus arteriosus. What is development of pulmonary trunk? Truncus arteriosus. Truncus arteriosus gets divided. Above truncus arteriosus is aortic sac, छोटा सा पार्ट. Above aortic sac are 2 aortic horns, right horn and the left horn. So arch of aorta develops from aortic sac, left horn, and fourth arch artery. Left fourth arch artery. So what is development of arch of aorta? Aortic sac, left horn and left fourth arch artery. मैं इतना हॉर्न क्यों बजा रहा हूँ? बिकॉज जो राइट हॉर्न है वहां से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक डेवलप, राइट हॉर्न से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक डेवलप होता है, एंड वहां से वापस हमारे कॉमन कैरोटिड एंड सो जो राइट हॉर्न, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हॉर्न से एंड फोर्थ आर्च आर्टरी से एओर्टा डेवलप हुआ, वैसे राइट हॉर्न से ब्रेकियोसेफेलिक, और उसका ही कंटिन्यूएशन इज फोर्थ आर्च आर्टरी. सो ऑन द राइट साइड द फोर्थ आर्च आर्टरी विल फॉर्म राइट सबक्लेविन. तो वो लॉजिक है कि कैसा यहाँ से हॉर्न एंड फोर्थ आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पे हॉर्न विल फॉर्म ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड कंटिन्यूएशन of which is the fourth arch artery, which will be forming right subclavian. Right subclavian. The left subclavian is formed by 7th cervical intercostal artery. Okay. Now below is the 6th arch artery. So this is 6th arch artery, which forms pulmonary artery. This pulmonary artery goes and supplies the lung, but it has a continuation which connects it with aorta. This is the ductus arteriosus. This ductus arteriosus gets obliterated to form ligamentum arteriosum. In case the fibers of the ductus arteriosus get inserted inside the aorta, then that can cause coarctation of aorta. In case some of these contractile fibers go in the wall of the aorta. So that's about the arterial arches. Thank you.